सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो चुपचाप हमारे पूरे फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदल रहा है, और वो है नए लेबर कोड। देखिए, ये सिर्फ एक एचआर का मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल और ऑडिट रिस्क है जिसका सीधा असर हमारी बैलेंस शीट पर पड़ने वाला है। तो आइए जरा गहराई से समझते हैं कि ये बदलाव हमारे लिए क्या मायने रखता है। आज की इस ब्रीफिंग में हम इन 6 मुख्य एरियाज को देखेंगे। हम बात करेंगे कि ये क्यों एक बड़ा फाइनेंशियल बदलाव है, वेतन की नई परिभाषा क्या है, मैनेजमेंट का कंप्लायंस रोडमैप क्या होगा, ऑडिटर्स के लिए क्या चुनौतियां हैं, कर्मचारियों के स्तर पर क्या बदलाव आए हैं, और सबसे जरूरी, इन जोखिमों को हम कैसे कम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, एक मौलिक वित्तीय बदलाव, और समझते हैं कि यह सच में इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात 21 नवंबर 2025, ये तारीख हमें याद रखनी है। इस दिन से नए लेबर कोड हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज यानी देनदारियों और कंप्लायंस रिस्क को पूरी तरह से बदल देंगे। और ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इवेंट है जिसकी तैयारी हमें आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। दूसरा सेक्शन, वेतन को फिर से परिभाषित करना। तो सवाल यह है कि आखिर इस सारे रिस्क की जड़ क्या है? जवाब है वेतन की एक नई यूनिवर्सल परिभाषा। आइए इसे समझते हैं। अब तक क्या होता था कि अलग अलग कानूनों के लिए वेतन की परिभाषा भी अलग अलग होती थी, जिससे काफी कंफ्यूजन होता था। लेकिन अब ग्रेचुटी हो, प्रोविडेंट फंड हो या कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, सबकी कैलकुलेशन के लिए एक ही परिभाषा का इस्तेमाल होगा। इसका सीधा मतलब है कि जिस बेस पर हम ये पेमेंट करते हैं वो बदलने वाला है, और इससे हमारी देनदारियां बढ़ सकती हैं। वैसे तो कानून कुछ चीजों को वेतन की परिभाषा से बाहर रखता है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस है, ओवर टाइम है, पीएफ का पैसा है वगैरह। ये वो चीजें हैं जो ट्रेडिशनल तौर पर वेतन का हिस्सा नहीं मानी जाती थी। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा लेकिन है, और यहीं से चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि तब क्या होगा जब ये सभी बाहर रखी गई चीजें, जिन्हें हम एक्सक्लूजन्स कहते हैं, किसी कर्मचारी के टोटल सैलरी के 50% से ज्यादा हो जाए। यहीं पर सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्विस्ट है जो सीधे हमारी लायबिलिटीज को हिट करेगा। ये 50% का नियम बहुत सीधा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। अगर किसी कर्मचारी की टोटल सैलरी में ये अलाउंस वगैरह 50% से ज्यादा है, तो जितनी भी एक्स्ट्रा रकम है उसे वेतन में वापस जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए किसी की टोटल सैलरी 100 रुपये है और अलाउंस 60 रुपये है, तो ये 10 रुपये जो 50% से ज्यादा हैं, उन्हें वापस वेतन में जोड़कर कैलकुलेशन की जाएगी। इससे ग्रेचुटी और पीएफ का बेस बढ़ जाएगा और हमारी देनदारी भी। तीसरा सेक्शन, मैनेजमेंट का कंप्लायंस रोडमैप। तो ठीक है, ये चुनौती तो है। इससे निपटने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? हमने एक 3 स्टेप की योजना तैयार की है। हमारी स्ट्रैटेजी के 3 पिलर हैं। सबसे पहले हमें अपने पेरोल सिस्टम को टेक्निकली रिकॉन्फिगर करना होगा ताकि वो नई कैलकुलेशन कर सके। दूसरा, हमें ये पक्का करना होगा कि हमारे एक्चुअली जो हमारी फ्यूचर लायबिलिटीज का हिसाब लगाते हैं वो सही डेटा पर काम कर रहे हों। और आखिर में इन सभी बदलावों को हमारी एचआर और कॉम्पेंसेशन पॉलिसीज में शामिल करना होगा। ये तीनों कदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक बात और समझनी बहुत जरूरी है, हम अभी एक ट्रांजिशन पीरियड में हैं। मतलब कोड तो लागू हो गए हैं, लेकिन उनके सपोर्टिंग रूल्स अभी नोटिफाई हो रहे हैं। जब तक ऐसा नहीं होता, हमें पुराने और नए दोनों नियमों को ध्यान में रखना होगा, जो इस पूरी प्रक्रिया को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। चौथा सेक्शन, ऑडिटर की चुनौती। अब हमने अपनी इंटरनल स्ट्रैटेजी तो देख ली, लेकिन सवाल यह है कि हमारे बाहरी ऑडिटर्स इसे कैसे देखेंगे। इन नए नियमों की वजह से अब उनकी जांच का दायरा और गहराई दोनों ही बढ़ने वाले हैं। ऑडिटर्स अब सिर्फ हमारे फाइनल नंबर्स नहीं देखेंगे, वो हमारे सैलरी ट्रेंड्स और रेशियो का एनालिसिस करेंगे। वो रैंडमली कर्मचारियों के सैंपल लेकर वेतन की रिकैलकुलेशन करेंगे, और सबसे जरूरी, वो हमारे एक्चुएरियल डेटा की मान्यताओं को चैलेंज करेंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी हर एक कैलकुलेशन नए वेतन के आधार से पूरी तरह मेल खाती हो। पांचवां सेक्शन, प्रमुख कार्मिक परिवर्तन। इन कोड्स का असर सिर्फ फाइनेंशियल कैलकुलेशन पर ही नहीं, बल्कि इस पर भी है कि कौन कौन से कर्मचारी अब इनके दायरे में आते हैं, और इससे हमारी देनदारी का दायरा और भी बढ़ जाता है। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब सुपरवाइजरी, मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी इन कानूनी सुरक्षा के दायरे में आ गए हैं। इसका मतलब है कि सीनियर मैनेजमेंट तक, जो पहले इन बेनिफिट से बाहर थे, अब इसके दायरे में है। इससे न सिर्फ हमारे वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा कवर होता है, बल्कि हाई सैलरी वाले कर्मचारियों के शामिल होने से हमारी देनदारी में काफी बढ़ोतरी होगी। और हाँ, ये एक और बहुत बड़ा बदलाव है। जो फिक्स टर्म कर्मचारी हैं, उनके लिए ग्रेचुटी की एलिजिबिलिटी अब 5 साल से घटकर सिर्फ 1 साल हो गई है। इसका मतलब है कि हमें अपनी बैलेंस शीट पर इस लायबिलिटी को बहुत तेजी से और बहुत जल्दी से दिखाना शुरू करना होगा। छठा और आखिरी सेक्शन, द बॉटम लाइन, रिस्क को कम करना। चलिए अब सारी बातों को समेटते हैं और बात करते हैं सबसे बड़े रिस्क की, और उसे हम कैसे कम कर सकते हैं। ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे ऑडिटर्स के लिए वेतन की परिभाषा को गलत समझना या गलत तरीके से लागू करना एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट का प्राइमरी रिस्क है।
सीधे शब्दों में कहें तो कैलकुलेशन में एक छोटी सी गलती भी हमारे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अविश्वसनीय बना सकती है। तो बॉटम लाइन यही है, अगर हम अपने वेतन के बेस को सही तरीके से अपडेट नहीं करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क पैदा करता है। इसे सही करना हमारी सबसे बड़ी फाइनेंशियल जिम्मेदारी है। तो अंत में मैं बोर्ड के सामने ये सवाल छोड़ना चाहता हूं, क्या हमारा गवर्नेंस फ्रेमवर्क इस नए कंप्लायंस स्टैंडर्ड के लिए तैयार है? ये सिर्फ एक फाइनेंशियल एडजस्टमेंट नहीं है, यह हमारे कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट की नींव का एक टेस्ट है। धन्यवाद। आज की इस गहरी चर्चा में स्वागत है। आज का विषय कुछ ऐसा है जिसने कॉर्पोरेट जगत और खास तौर पर अकाउंटिंग की दुनिया में एक बड़ा तहलका मचा दिया है। हाँ बिल्कुल, तहलका ही कहेंगे इसे। जी, हम बात कर रहे हैं उन भारी भरकम बदलावों की जो 21 नवंबर 2025 से भारत में लागू हुए हैं। मेरा मतलब है 4 नए लेबर कोड्स। वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी और ओएसएच कोड। सही कहा। तो इन चारों ने मिलकर पुराने 29 श्रम कानूनों की जगह ले ली है और आज हमारा मिशन है आईसीएआई के नए गाइडेंस डॉक्यूमेंट के आधार पर यह गहराई से समझना कि वेजेस की इस नई परिभाषा के कारण ऑडिटर्स के लिए अब व्यवहारिक परिणाम क्या होने वाले हैं। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। एकदम सही। ये सिर्फ कुछ नियमों या पन्नों का बदलाव नहीं है, ये कंपनियों की बैलेंस शीट, उनके काम करने के तरीके और कर्मचारियों के अधिकारों को पूरी तरह से बदलने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। एक ऑडिटर के नजरिए से देखें तो अब केवल वाउचर्स या स्प्रेडशीट्स की जांच करना ही काफी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अब चीजें बहुत जटिल हो गई हैं। हाँ, अब ऑडिटर्स को यह समझना होगा कि इन नए लेबर कोड्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर सीधा प्रभाव कैसे पड़ रहा है। मैनेजमेंट जो भी लायबिलिटीज बुक कर रहा है, क्या वो इन नए और मुश्किल नियमों के हिसाब से सही है या नहीं? तो आइए सबसे पहले उस बदलाव से शुरू करते हैं जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, वेजेस की नई परिभाषा। इसमें एक 50% वाला नियम लाया गया है जो कि बहुत ही क्रिटिकल है। हाँ, इसे अगर एक उदाहरण से समझें तो मान लीजिए किसी कर्मचारी का टोटल रेम्यूनरेशन 1 लाख रुपए है। कंपनी ने बेसिक सैलरी 30,000 रुपए रखी है और बाकी 70,000 रुपए हाउस रेंट अलाउंस, ओवरटाइम और पीएफ जैसी चीजों में बांट दिए हैं, जो वेजेस की परिभाषा से बाहर है। बिल्कुल, और यहीं पर नया नियम खेल बदल देता है। सही कह रही हूँ। अब नए नियम के हिसाब से ये बाहर की गई चीजें टोटल रेम्यूनरेशन के 50% यानी 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। इस केस में बाहर की गई चीजें 70,000 है, जो लिमिट से 20,000 ज्यादा है। तो ये अतिरिक्त 20,000 रुपए वापस वेजेस में जोड़ दिए जाएंगे। और हाँ, अगर कुल वेतन का 15% तक हिस्सा इन काइंड बेनिफिट्स यानी वस्तु के रूप में दिया जाता है तो वो भी अब वेजेस का हिस्सा माना जाएगा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ वेजेस की परिभाषा ही नहीं बदली है, बल्कि कर्मचारी शब्द का दायरा भी अब बहुत बड़ा हो गया है। पहले बहुत से सुरक्षा और लाभ केवल ग्राउंड लेवल वर्कर तक सीमित थे, मतलब अब इसमें ऊपर के लोग भी आ गए हैं। हाँ बिल्कुल, अब सुपरवाइजरी, मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को भी इस परिभाषा में शामिल कर लिया गया है। उदाहरण के लिए ओएसएच कोड के तहत सुपरवाइजर के लिए जो छूट की सीमा पहले 10,000 रुपए प्रति माह थी, उसे बढ़ाकर अब 18,000 रुपए कर दिया है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अब वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन कोड्स के दायरे में आ गया है और इसी वजह से ऑडिटर्स का काम कई गुना बढ़ जाता है। जी, ऑडिटर्स को अभी जांचना होगा कि कंपनी के मैनेजमेंट ने इस नई और बहुत बड़ी एम्प्लॉय पॉपुलेशन की सही पहचान की है या नहीं, क्योंकि अगर बेस डेटा ही गलत हुआ, बिल्कुल सारी कैलकुलेशन ही बिगड़ जाएगी। एकदम सही। ऑडिट प्रक्रिया अब बहुत गहरी हो गई है। ऑडिटर को अब कंपनी की एचआर की डिप्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस को समझना होगा। उन्हें यह देखना होगा कि कंपनी की अलग अलग लोकेशंस पर कितने परमानेंट कर्मचारी हैं, कितने फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और पेरोल का स्ट्रक्चर कैसा है। मतलब सिर्फ एक्सेल शीट देखने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, ऑडिटर्स को नए कॉन्ट्रैक्ट्स के सबूत जुटाने होंगे और यह पक्का करना होगा कि मैनेजमेंट ने इस 50% वाले नियम को हर एक कर्मचारी पर सही से लागू किया है। अगर मैनेजमेंट किसी मैनेजर को इस दायरे से बाहर मान रहा है तो ऑडिटर को उसके जस्टिफिकेशन के सबूत मांगने होंगे। ये सिर्फ सैंपलिंग का खेल नहीं रह गया है, ये पूरे पेरोल मास्टर डेटा की गहन जांच है। हाँ, इसे पूरा मास्टर डेटा वैलिडेशन कहते हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि जब वेजेस बढ़ेंगे तो उन वेजेस पर कैलकुलेट होने वाले लाभ भी बदलेंगे, खास तौर पर एक्चुरियल लाइबिलिटीज जैसे कि ग्रेचुटी। ग्रेचुटी तो सबसे बड़ा मुद्दा है इस पूरे ट्रांजिशन का। एकदम। और ग्रेचुटी को लेकर तो सोशल सिक्योरिटी कोड में एक और बड़ा धमाका हुआ है। पहले फिक्स टर्म कर्मचारियों को ग्रेचुटी पाने के लिए 5 साल लगातार काम करना पड़ता था,
लेकिन अब फिक्स टर्म कर्मचारियों को सिर्फ 1 साल की सेवा के बाद ही ग्रेच्युटी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये ग्रेच्युटी अब पुरानी कम बेसिक सैलरी पर नहीं बल्कि नई वेजेस की परिभाषा के आधार पर कैलकुलेट होगी। मतलब कंपनियों पर बहुत भारी वित्तीय बोझ पड़ने वाला है। जी, और इसी खर्च को ऑडिट करने के लिए बहुत सी सावधानियां बरतनी होंगी। ऑडिटर्स को एक्चुरियो वैल्यूएशन के लिए भेजे गए डेटा की पूरी और बारीकी से जांच करनी होगी। पहले ऑडिटर को एचआर मास्टर रिकॉर्ड्स का पेरोल डेटा के साथ मिलान करना होगा ताकि कोई छूट ना जाए। बिल्कुल, ये देखना होगा कि क्या 1 साल पूरा करने वाले सभी फिक्स टर्म कर्मचारियों को डेटाबेस में शामिल किया गया है। क्या ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने के लिए जो वेज बेस लिया गया है वो नए 50% वाले नियम के हिसाब से सही है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि डेटा एक्सट्रैक्ट करते समय पुरानी डेफिनेशन वाले फील्ड्स ही एक्चुअल को भेज दिए जाते हैं। मैंने ICII का गाइडेंस पढ़ा था और उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाला हिस्सा सच में चौंकाने वाला है। चूंकि ये एक रेट्रोएक्टिव बेनिफिट है, इंड AS 19 या AS 15 के तहत इस बढ़ी हुई लाइबिलिटी को पास सर्विस कॉस्ट माना जाएगा। हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल अकाउंटिंग पॉइंट है। इसका मतलब है कि कंपनियों को इस खर्च को धीरे धीरे अमोर्टाइज करने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि इसे तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी P&L में एक्सपेंस के तौर पे दिखाना होगा। इससे तो कंपनियों के क्वार्टरली मुनाफे पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। बिल्कुल, इंड AS 19 इस मामले में बहुत सख्त है। और सिर्फ डेटा ही नहीं, ऑडिटर को उन एक्चुअल असम्पशंस की भी जांच करनी होगी जो लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल की गई हैं, जैसे कि डिस्काउंट रेट, सैलरी एस्केलेशन रेट और एट्रिशन रेट। कहीं मैनेजमेंट ने अपने फायदे के लिए इन दरों में हेरफेर तो नहीं किया है, जिसे हम मैनेजमेंट बायस कहते हैं। बिल्कुल, यही जांचना है। हाँ, वे तर्क दे सकते हैं कि हमारे यहाँ तो ज्यादातर फिक्स टर्म कर्मचारी 1 साल पूरा होने से पहले ही छोड़कर चले जाएंगे। सही कहा। और अगर एट्रिशन रेट ज्यादा मान लिया गया तो आज की तारीख में जो ग्रेच्युटी एक्सपेंस बुक करना है वो अपने आप कम हो जाएगा। ऑडिटर्स को इस चालाकी को पकड़ना होगा और मैनेजमेंट से पूछना होगा कि इस हाई एट्रिशन रेट का ऐतिहासिक आधार क्या है। जी हाँ, और एक और तकनीकी पहलू है जिस पर ऑडिटर को ध्यान देना है। अगर कोई कंपनी नए कोड्स के लागू होने पर अपने कर्मचारियों की सैलरी को सिर्फ रीस्ट्रक्चर करती है, मेरा मतलब है कुल पैसा वही है, बस बेसिक और अलाउंस का अनुपात बदला है, तो वो प्लान अमेंडमेंट है और उसका पूरा असर पास सर्विस कॉस्ट में जाएगा। लेकिन अगर कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग के साथ साथ कर्मचारियों की सैलरी में कोई वास्तविक बढ़ोतरी भी करती है तो ऑडिटर को यह सुनिश्चित करना होगा कि मैनेजमेंट ने उस वास्तविक बढ़ोतरी वाले हिस्से को एक्चुअल गेन या लॉस में डाला है। दोनों को अलग अलग बांटना बहुत जरूरी है और ये कोई आसान काम नहीं है। ये सब सुनने के बाद एक बात तो तय है कि कंपनियों को अपने पेरोल सिस्टम और सॉफ्टवेयर्स में भारी बदलाव करने पड़े होंगे। लेकिन हकीकत में क्या ऑडिटर्स के पास इतना समय या तकनीकी क्षमता होती है कि वे पेरोल सॉफ्टवेयर के कोड या कॉन्फ़िगरेशन को मैन्युअली टेस्ट कर सके? ये तो फाइनेंशियल ऑडिट से ज्यादा एक IT ऑडिट का काम लगता है। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। फाइनेंशियल ऑडिटर से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो सॉफ्टवेयर का कोड पढ़े, लेकिन नए नियमों के तहत ऑडिटर को पेरोल कॉन्फ़िगरेशन में हुए बदलावों के रिव्यू और अप्रूवल प्रोसेस को जांचना होगा, जिसे पेरोल कंट्रोल्स की टेस्टिंग कहते हैं। बिल्कुल। क्या मैनेजमेंट ने इन बदलावों को लाइव सिस्टम में डालने से पहले ठीक से टेस्ट किया था? ऑडिटर को HR मास्टर रिकॉर्ड्स और पेरोल रजिस्टर के बीच के मिलान को बारीकी से देखना होगा। ऑडिटर एक सैंपल लेगा और सिस्टम से बाहर स्प्रेडशीट पर खुद कैलकुलेट करके देखेगा कि क्या सिस्टम नए 50% वाले नियम के हिसाब से सही वेजेस निकाल रहा है। अगर सिस्टम का आउटपुट और ऑडिटर का मैनुअल आउटपुट मैच नहीं करता तो इसका सीधा मतलब है कि कंट्रोल गैप है। लेकिन इन कंट्रोल्स के बावजूद एक बहुत बड़ा रिस्क ये है कि मैनेजमेंट जानबूझकर रीस्ट्रक्चरिंग का सहारा ले सकता है। मेरा मतलब है, क्या कंपनियां जानबूझकर कर्मचारियों के वेतन को इस तरह से डिजाइन कर सकती हैं, जैसे कि बेसिक सैलरी को काफी कम करके कुछ ऐसे रीइंबर्समेंट वाले भत्तों को बढ़ाना जिन पर ये नियम लागू ही ना हो, ताकि वे 50% की सीमा के अंदर ही रहे? हाँ, जिससे उन पर ग्रेचुइटी या PF का वित्तीय बोझ कम पड़े। कैसा हो सकता है? अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये जोखिम 100% वास्तविक है। मैनेजमेंट का पहला लक्ष्य अक्सर लागत को नियंत्रित करना होता है और इसी खतरे को भांपने के लिए ऑडिटर्स को एनालिटिकल प्रोसीजर्स का बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना होगा। सिर्फ नंबर्स देखना काफी नहीं होगा जी। ऑडिटर सिर्फ ये नहीं देखेगा कि आज की तारीख में वेजेस क्या हैं, उसे लेबर कोड्स लागू होने से ठीक पहले के वेज स्ट्रक्चर और लागू होने के बाद के वेज स्ट्रक्चर का एक तुलनात्मक विश्लेषण करना होगा। तो ऑडिटर को ट्रेंड्स देखने होंगे कि कहीं अचानक से कोई विशेष अलाउंस तो नहीं बढ़ गया है या सैलरी कंपोनेंट्स का रिक्लासिफिकेशन तो नहीं कर दिया गया है। एकदम सही। और ऑडिटर का काम सिर्फ एक्सेल शीट्स तक सीमित नहीं है, उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स के मिनट्स भी गहराई से पढ़ने होंगे। अच्छा, मीटिंग्स के मिनट्स क्यों? क्योंकि अगर कंपनी लागत कम करने के लिए वेतन ढांचे में जानबूझकर कोई ऐसा बदलाव कर रही है जो नियमों के खिलाफ जा सकता है, तो किसी न किसी मीटिंग में उस वित्तीय प्रभाव को कम करने की रणनीति पर चर्चा जरूर हुई होगी। ऑडिटर को उन चर्चाओं को पकड़ना है। ये तो हुई कंपनी के अंदर बैठे परमानेंट कर्मचारियों की बात, लेकिन इन नए कोड्स ने एक बिल्कुल नए वर्ग को भी पहचान दी है, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स,
जैसे कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाले या कैब ड्राइवर्स। पहली बार सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत इन वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। ये एक बहुत ही जटिल और बिल्कुल नया कंप्लायंस एरिया है। परमानेंट स्टाफ और गिग वर्कर्स के ऑडिट अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर है। वो कैसे? परमानेंट स्टाफ के ऑडिट में ऑडिटर का मुख्य फोकस 50% वाले वेजेस रूल, ग्रेजुटी कैलकुलेशन और छुट्टियों के एनकैशमेंट पर होता है, लेकिन गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के मामले में ऑडिट का पूरा तरीका एक अलग दिशा में चला जाता है। हाँ, और इसकी गणित तो और भी ज्यादा घुमावदार है। सोशल सिक्योरिटी कोड ये कहता है कि जो एग्रीगेटर्स हैं उन्हें अपने वार्षिक टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी फंड में जमा करना होगा। जी, पर इसमें एक शर्त भी है। बिल्कुल, इसके साथ एक बड़ी शर्त लगा दी गई है। ये कंट्रीब्यूशन उस वर्कर को दिए गए कुल भुगतान के 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। अब सोचिए एक बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी का उदाहरण, जिसका एनुअल टर्नओवर तो हजारों करोड़ में है, लेकिन हर डिलीवरी पर वर्कर को दिया जाने वाला भुगतान काफी कम होता है। ऐसे में ये 5% वाला कैप बहुत क्रिटिकल हो जाता है। बिल्कुल, और यहीं पर ऑडिटर का सरदर्द शुरू होता है। यहाँ ऑडिटर को 2 अलग-अलग डेटा सेट्स को वैलिडेट करना होता है। पहला, क्या कंपनी ने अपना एनुअल टर्नओवर सही तरीके से कैलकुलेट किया है, और दूसरा, क्या वर्कर्स को दिए गए कुल भुगतान का जो डेटा पेरोल या वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम से आ रहा है वो पूरी तरह से सटीक है। तो ऑडिटर को दोनों को अलग अलग चेक करना होगा। हाँ, ऑडिटर को अलग से सैंपल लेकर स्वतंत्र रूप से ये कैलकुलेशन करनी होगी कि फंड में जो पैसा जमा किया गया है वो इस डुअल कंडीशन वाले फॉर्मूले के हिसाब से एकदम सही है या नहीं। ये परमानेंट कर्मचारियों की ग्रेजुटी कैलकुलेट करने से बिल्कुल अलग तरह का ऑडिट प्रोसीजर है। जब इतने जटिल फॉर्मूले और सिस्टम एक साथ आते हैं, चाहे वो गिग वर्कर्स का मैथ हो या एक्चुअल लाइबिलिटीज की कैलकुलेशन, तो मैनेजमेंट का कंफ्यूज होना स्वाभाविक है। और जब मैनेजमेंट कंफ्यूज होता है तो वे बाहरी वकीलों यानी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल की राय लेते हैं, खासकर ट्रांजिशन के इस दौर में। जी, बाहरी राय लेना आम बात है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? क्या एक ऑडिटर लीगल मैटर समझकर उस बाहरी वकील की रिपोर्ट पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ऑडिटर सिर्फ ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि मैनेजमेंट के पास तो वकील की रिपोर्ट है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत स्पष्ट हैं इस मामले में। मतलब ऑडिटर को खुद भी जांच करनी होगी? हाँ, जब मैनेजमेंट किसी बाहरी विशेषज्ञ की राय का उपयोग करता है तो ऑडिटर को उस बाहरी वकील की योग्यता, उसकी आजादी और लेबर लॉ में उसके अनुभव का गहराई से मूल्यांकन करना होगा। वकील ने जो निष्कर्ष निकाले हैं, ऑडिटर को उनकी तुलना सरकार द्वारा जारी किए गए पब्लिक नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स और FAQs से करनी होगी। इसके अलावा एक और बड़ा रिस्क ओपिनियन शॉपिंग का होता है। बिल्कुल, ये बहुत होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। कई बार मैनेजमेंट कई वकीलों से बात करता है और सिर्फ उस लीगल ओपिनियन को ऑडिटर के सामने रखता है जो कंपनी के फायदे में होती है। ऑडिटर को मैनेजमेंट से सीधे तौर पर पूछना होगा कि क्या इस राय के अलावा कोई और विरोधी राय या डिसेंटिंग ओपिनियन भी आई थी जो उन्होंने छुपा ली हो। और अगर मामला बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, जहां कानूनी भाषा के कई मतलब निकल रहे हों, तो ऑडिटर को खुद का एक अलग कानूनी विशेषज्ञ भी नियुक्त करना पड़ सकता है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस यानी TCWG, जो कंपनी के टॉप डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी हैं, उनके साथ ऑडिटर का संवाद कैसा होना चाहिए। नए लेबर कोड्स के आने के बाद ये कम्युनिकेशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गया है। हाँ, ऐसे 260 जो कि ऑडिटिंग का एक स्टैंडर्ड है, वो इस संवाद का पूरा फ्रेमवर्क तय करता है। इसके तहत ऑडिटर को ऑडिट कमेटी के साथ बैठना होगा और उन्हें साफ साफ बताना होगा कि नए कोड्स के लागू होने के कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क कितना बढ़ गया है। उन्हें पूरा गणित समझाना होगा। जी, ऑडिटर को उन्हें समझाना होगा कि ग्रेजुटी और छुट्टी के एनकैशमेंट के कारण P&L पर जो भारी वित्तीय असर पड़ा है उसका गणित क्या है। इसके अलावा ट्रांजिशन के दौरान मैनेजमेंट ने जो बड़े फैसले या सिग्निफिकेंट जजमेंट्स लिए हैं, जैसे कि 50% रूल में किस अलाउंस को शामिल किया और किसे छोड़ा, उस पर ऑडिटर की क्या राय है। जरूरी अगर पेरोल सिस्टम या डेटा वैलिडेशन में कोई कंट्रोल गैप्स पाए गए हैं तो वो भी टॉप मैनेजमेंट के संज्ञान में तुरंत लाना होगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ऑडिट कमेटी को इन रिस्क्स का पता नहीं होगा तो वे भविष्य के लिए सही वित्तीय योजना नहीं बना पाएंगे। ये एक ऐसा ट्रांजिशन है जो ऑडिट प्रोफेशन से बहुत ज्यादा सतर्कता और पेशेवर संदेह यानी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की मांग करता है। मतलब हर नंबर पर सवाल उठाना होगा जो मैनेजमेंट पेश कर रहा है। बिल्कुल, बिना सवाल किए कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये वाकई एक बहुत बड़ा और गहरा विषय है। इस पूरी चर्चा का सार अगर निकालें तो नए लेबर कोड्स ने ऑडिटिंग को सिर्फ अकाउंटिंग तक सीमित नहीं रखा है। अब ऑडिटर्स को HR की नीतियों की गहराइयों में उतरना पड़ रहा है, लेबर लॉ की कानूनी पेचीदगियों को समझना पड़ रहा है और मैनेजमेंट की मंशा को भी एनालिटिकल टूल्स के जरिए परखना पड़ रहा है। यह सुनिश्चित करने का मुद्दा है कि एक तरफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तस्वीर पेश करें और दूसरी तरफ कंपनियों का कंप्लायंस स्ट्रक्चर इतना मजबूत हो कि वो नए नियमों की भावना का सम्मान करे। और ये सब बिना किसी लूप होल का अनुचित फायदा उठाए होना चाहिए। ऑडिटर्स अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इस नई दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ढाल बन गए हैं। एकदम सही बात कही आपने।
तो चलिए इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के सोचने के लिए एक ऐसा नया और रोचक बिंदु छोड़ते हैं जिस पर हमने अभी तक गहराई से बात नहीं की है। जी बताइए। जरा सोचिए क्या होगा अगर कोई कंपनी अपना पेरोल खुद चलाती ही नहीं है। आज के समय में बहुत सी कंपनियां अपना पूरा पेरोल प्रोसेस किसी थर्ड पार्टी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स कर देती हैं। अब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड SA 402 के तहत नए लेबर कोड्स आने के बाद ऑडिटर्स की जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। जिन लोगों ने हाल ही में SA 402 नहीं पढ़ा है उन्हें ये जानना चाहिए कि ऑडिटर्स को अब सिर्फ अपनी कंपनी के सिस्टम नहीं देखने बल्कि उस थर्ड पार्टी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट्स की भी कड़ी जांच करनी होगी, जो कि मूल रूप से उस बाहरी कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स का एक हेल्थ चेक होती हैं। बिल्कुल। ऑडिटर को यह पक्का करना होगा कि वो बाहरी कंपनी जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है क्या वो नए कोड्स के हिसाब से वेजेस सही कैलकुलेट कर रहा है, क्या वो थर्ड पार्टी 50% वाले नियम का सही पालन कर रही है, क्योंकि अगर उस बाहरी कंपनी के सिस्टम में गड़बड़ी हुई और कर्मचारियों को कम भुगतान हुआ तो कानूनी और वित्तीय लायबिलिटी तो हमारी मुख्य कंपनी पर ही आएगी। और क्या हमारी कंपनियां और उनके आउटसोर्स पार्टनर्स कंप्लायंस के इस नए और सख्त स्तर के लिए सच में तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। क्या आपकी कंपनी का पेरोल और कंप्लायंस नए लेबर कोड्स के लिए तैयार है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो इंडियन कंप्लायंस और बिजनेस लैंडस्केप को पूरी तरह बदल रहा है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 4 नए लेबर कोड्स। ये है कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड। ये कोड्स 21 नवंबर 2025 से लागू हो चुके हैं और इन्होंने पिछले 29 लेबर लॉज को सब्ज्यूम कर लिया है। सरकार ने इसके लिए कोई ट्रांजिशन पीरियड नहीं दिया है। जब तक नए रूल्स फुल्ली नोटिफाई नहीं होते तब तक पुरानी रूल्स वैलिड रहेंगे। बस शर्त यह है कि वो इन नए कोड से कॉन्फ्लिक्ट ना करे। सबसे बड़ा और क्रूशल बदलाव वेजेस की नई डेफिनेशन में आया है। नए रूल्स के मुताबिक अब आप अलाउंसेस जैसे कि HRA को टोटल रेम्यूनरेशन के 50% से ज्यादा नहीं रख सकते। अगर एक्सक्लूजन्स 50% क्रॉस करते हैं तो एक्सेस अमाउंट वापस वेजेस में ऐड हो जाएगा। इसका सीधा असर आपकी कंपनी के PF, ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट की कॉस्ट पर पड़ेगा। इसके साथ ही एम्प्लॉय की डेफिनेशन एक्सपैंड करके अब सुपरवाइजरी और मैनेजरियल स्टाफ को भी स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दी गई है। नया वेज कोड जेंडर न्यूट्रल पे और एक मैंडेटरी नेशनल फ्लोर वेज इंश्योर करता है। दूसरा बड़ा बदलाव सोशल सिक्योरिटी कोड में आया है, जहां एक बड़ा रिलीफ फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को मिला है। उन्हें अब 5 साल नहीं बल्कि सिर्फ 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस पर ही ग्रेजुटी मिलेगी। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी पहली बार सोशल सिक्योरिटी नेट में लाया गया है, जिसमें एग्रीगेटर्स को अपने टर्नओवर का 1 से 2% कंट्रीब्यूट करना होगा। वहीं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में रिट्रेंच्ड वर्कर्स के लिए वर्कर रीस्किलिंग फंड बनेगा, जिसमें एम्प्लॉयर्स को 15 दिन की वेजेस का कंट्रीब्यूशन देना होगा। OSH कोड के तहत एनुअल लीव्स अब 18 दिन सेट की गई हैं, जिसमें 30 दिन तक का कैरी फॉरवर्ड और एक्सेस लीव्स का एनकैशमेंट अलाउड है। ध्यान रहे, अब पेनल्टीज काफी स्ट्रिक्ट हो गई है, इसीलिए कंप्लायंस जरूरी है। अब आते हैं ICAI द्वारा बताए गए अकाउंटिंग और ऑडिट इम्प्लीकेशंस पर। वेज डेफिनेशन बदलने से कंपनीज की ग्रेजुटी और लीव ऑब्लिगेशंस डेफिनेटली बढ़ेंगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इंड AS 19 या AS 15 के तहत इस बढ़ोतरी को पास्ट सर्विस कॉस्ट या प्लान अमेंडमेंट माना जाएगा। इसे आप एक्चुएरियल अजम्पशन चेंज नहीं मान सकते। इसका मतलब है कि ये एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको सीधे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इमीडिएटली एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करनी होगी। 31 दिसंबर 2025 को एंड होने वाले इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसका इम्पैक्ट लेना जरूरी है, पर जो पीरियड्स 21 नवंबर से पहले एंड हुए हैं उनके लिए ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा, जिसका सिर्फ डिस्क्लोजर दिया जाएगा। अगर फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत मटेरियल है तो इसे एक्सेप्शनल आइटम की तरह भी प्रेजेंट किया जा सकता है। टैक्सेशन की बात करें तो ग्रेचुटी या लीव प्रोविजंस पर इनकम टैक्स डिडक्शन अभी भी एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही मिलेगा। अकाउंटिंग एक्सपेंस और टैक्स डिडक्शन के इस टाइमिंग डिफरेंस की वजह से एंटिटीज को इंड AS 12 या AS 22 के हिसाब से डेफर्ड टैक्स एसेट DTA क्रिएट करना पड़ सकता है।
आखिर में एज एन ऑडिटर ऐसे 250 के तहत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आपको इंश्योर करना है कि मैनेजमेंट ने नई वेज डेफिनेशंस के हिसाब से HR रिकॉर्ड्स, पेरोल सिस्टम्स और एक्चुएरियल वैल्यूएशंस एक्यूरेटली अपडेट किए हैं। अगर लायबिलिटीज ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं हुई हैं तो ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देना पड़ सकता है। अगर डिस्क्लोजर्स ठीक है पर इम्पैक्ट फंडामेंटल है तो रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ जरूर ऐड करें। इन नए कोड्स का मकसद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वर्कर्स का कल्याण दोनों है। एज प्रोफेशनल्स ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक ट्रांसपेरेंट और कंप्लायंट ट्रांजिशन इंश्योर करें। धन्यवाद। All right, let's get right into it. Today, we're breaking down the absolutely mandatory audit strategy for India's new labor codes. This isn't just an update, it's a fundamental shift in how we audit employee liabilities, and we need to be ahead of it. So, let's approach this exactly as if we're preparing our final findings for the Engagement Quality Control Reviewer. We're going to focus on how these new codes completely change our risk models and, by extension, how we think about materiality. Okay, here's our roadmap. We've got 6 key sections. We'll kick things off with the new risk landscape, then dive deep into the 3 biggest financial statement risks we've identified. After that, we'll get a bit academic on undocumented worker risks before we land on the bottom line, the impact on our audit opinions. So, Section 1. This is all about setting the stage. The ground has literally shifted under our clients' feet, which means it shifted under ours too. We're in a whole new world now. Now, here's the crucial part to grasp. The codes themselves, they're the law. But the detailed rules for how to implement them, well, they're still up in the air. This puts us and management in a tricky spot, a real regulatory gray zone. Management has to make judgment calls about which old rules still work, and that uncertainty, that's what we have to audit. And this quote right here, from Standard on Auditing 250, this anchors our entire conversation. It's crystal clear. These aren't just some operational or HR compliance issues. No, these are laws with a direct and potentially material effect on the numbers in the financial statements. This is our job, squarely in our court. Which brings us to our first major risk. And believe me, this one is a big deal. We're talking about the very real possibility of a material misstatement of employee liabilities, and it's all driven by a brand new definition of wages. So, this is the heart of the matter. The very foundation for calculating things like gratuity and leave pay has been completely rewritten. Think about it. If a company's excluded allowances, like HRA and overtime, go over 50% of an employee's total pay, that excess amount gets added back into the wage base. This could cause their statutory liabilities to balloon. We're not talking about a small tweak. This requires a ground-up recalculation. So, how do we audit this? We can't just rely on what management tells us. This technical walkthrough is now a mandatory part of our workflow. It's non-negotiable. We have to select our own samples, go back to source documents, and independently test this 50% rule. And that, of course, flows directly into our work on actuarial valuations. As per SA 540, we have to really dial up the intensity on our testing of the inputs. Is the actuary even using the new wage definition? Is the employee data they're working with complete and accurate? You know the saying, garbage in, garbage out. Any errors here will lead directly to a material misstatement. Okay, on to our second key risk. This one is all about misclassifying the workforce. But the real twist here isn't just about who counts as an employee. It's about who the company is now considered an employer to. The scope has gotten much, much wider. I mean, just look at the difference here. It is stark. The definition of an employer has been stretched to include a whole new group of people. Our clients are now on the hook for a much wider net of individuals, and we need to audit whether they've even identified this new population correctly.
You can almost think of this as a new onboarding checklist for our audit procedures. We have to verify that management has a solid process to identify everybody on this list. And look at that. The inclusion of contractors? That is a massive change with potentially huge financial implications. And here we have an absolute financial game changer. This is a huge risk area. Before, gratuity for fixed-term employees was kind of a distant thought. Now, it's a short-term liability. If a company fails to accrue gratuity for these employees after just 1 year, that's a direct misstatement of their liabilities. Period. Okay, let's talk about the operational side. The risk of systemic failure here is very real. You can't implement these new codes with a quick spreadsheet update. This requires deep, fundamental changes to systems, controls, and processes. These new rules pretty much demand system changes, which introduces significant IT risk. So we have to audit the controls around the entire implementation, from the design all the way to testing whether they actually work. And as SA 330 reminds us, we can't just take management's word for it. We have to back up their claims with our own independent test results. Now this brings us to a really tricky, judgmental area. The new wage definition can include benefits in kind up to 15% of total pay. This creates a ton of estimation uncertainty. How exactly is management valuing these non-monetary benefits? So, what's our response? We have to ramp up our professional skepticism, big time. We need to challenge management's judgments, dig into their valuations, and really assess the quality of any legal opinions they're leaning on. And critically, this means we have to enhance our own risk assessment documentation under SA 315 to specifically call out the risks tied to these new judgments and estimates. All right, let's take a step back and put on our academic hats for a moment. There's a rapidly emerging risk that these new codes are shoving into the spotlight: the classification of non-traditional workers, especially those in the gig economy. This quote just nails it. The gig economy has been operating in this legal gray area for years. Well, the new Social Security Code changes all of that. It formally recognizes gig workers, which creates a whole new set of obligations for the companies using them. So what does this mean for us as auditors? It means our job now includes auditing management's process for identifying this entire population of workers. We have to check for completeness and then verify the accuracy of the contributions, which, get this, are based on turnover, not profit. This creates a brand new liability and a significant risk of it being understated. So after all of that, where does this leave us? It all comes down to the most critical part of our audit, the opinion we issue. And let me tell you, the stakes for getting this right are incredibly high, for the client and for us. This table maps out the consequences perfectly, right from SA 705. If we find a misstatement that's material but not pervasive, that's a qualified opinion. But if we can't get the evidence we need on something that's both material and pervasive, that forces our hand. We have to issue a disclaimer of opinion. And that, right there, is the final question we have to answer for the EQCR, for ourselves, for everyone relying on our work. Did we get enough solid evidence to say these financials are clean of material misstatement from these new codes? Or is there still a material uncertainty hanging over them? Our answer to that question determines everything. It's not just about our opinion. It's about the integrity of the financial statements we sign off on. Welcome back to the deep dive. So, today we are looking at a stack of regulatory papers that is currently keeping CFOs all over India up at night. We're talking about the new labor codes.
And if you are an auditor sitting out there, especially if you're fresh on the job and stepping into your first major field assignment, this is not just some dry legal update. This is really a survival issue. It really is. We are watching 29 different existing labor laws getting entirely crunched down into just 4 codes. I mean, for a lawyer, that's fascinating. But for an auditor, it's honestly a nightmare because it changes the fundamental numbers in the financial statements you're signing off on. But here's the major problem right out of the gate. I'm looking at the implementation timeline, and it feels like we're auditing a moving target. The central government is ready, they've published their draft rules, but the states are heavily dragging their feet. Yeah, that is the classic audit fog right there. As of today, most states haven't finalized their specific rules. You've got Gujarat and Arunachal Pradesh fully locked and loaded, but that's about it. So, you have auditors standing in a factory in Maharashtra or Karnataka asking, wait, what rules am I even checking this payroll against? Exactly. So our mission for this deep dive is to build you a specific survival guide for your documentation. We aren't just going to read the law to you. We're going to treat this like a training session. When you were sitting in that audit room, staring at a massive payroll spreadsheet, what exact evidence do you need to save to your work papers so you don't get a massive review note later? Right, because we need to move from just knowing the rules exist to actually proving compliance on paper. Let's start with the biggest number on the page, which is the definition of wages. Under the old rules, companies played a lot of games with this, right? They'd keep the basic salary super low, pump up the allowances, and effectively save a ton of money on statutory dues. Oh, the famous allowance structure. Yeah, the new code on wages attacks that loophole directly with what we call the 50% rule. Walk me through exactly how that works. It's simpler than it sounds in the text, but it is deadly for payroll costs. The law gives you a list of specific exclusions, things like your house rent allowance, overtime, conveyance, and PF contributions. You can exclude these from the core wage definition. But, and this is the kicker, there is a hard cap. If those exclusions exceed 50% of the total remuneration, the excess amount gets dragged right back into the wage bucket. So if a company tries to get clever and pays their staff, say, 30% basic salary and 70% special allowances to artificially lower their statutory burden. The law essentially says, nice try. That extra 20% above the halfway mark gets added back to the wages. And suddenly, your gratuity liability isn't based on that tiny basic salary anymore. It's based on that much larger adjusted number. Which means the company owes significantly more money. Now, put yourself in the shoes of the entry-level auditor. I can't just walk up and ask the HR director if they did the math right and take their word for it. I need proof in the file. What does that specific evidence look like for this risk assessment? You need to perform an independent recalculation. Yeah. You absolutely cannot rely on the payroll system summary report. You need to pick a sample of employees. And don't pick the easy, straight salary ones. Pick the guy with the weird, complex salary structure involving 3 different quarterly bonuses. You need to manually calculate his wage using that 50% inclusion rule and document step by step that your manual number matches the system's generated number. So I'm putting literal manual math into the work paper. Literal math, yes. Show your work. And then you need to zoom out and do a ratio analysis. Document the comparison of total statutory contributions, like Provident Fund, dues to the total growth wages for the entity. Then compare that percentage to the prior periods. What exactly am I looking for when I run that ratio? You are looking for a shift. If the definition of wages got wider across the board because of the new law, that contribution ratio should inherently go up. If the ratio looks exactly the same as it did in prior years, that's a massive red flag. It strongly suggests management might just be running the old payroll logic and hoping you don't notice. Okay, that makes total sense. But there's another documentation trap in here regarding in-kind payments, right? Like if the company gives an employee a car or rent-free housing
instead of a cash allowance. Right. The value of remuneration in kind is now strictly capped at 15% of total remuneration. If it's higher, that excess also forms part of wages. You need a specific tick mark in your work paper verifying that the entity actually checked this. Most legacy systems aren't set up to flag these perps automatically, so this is very often a manual spreadsheet calculation done by HR that you need to obtain, review, and verify. Okay, so we've established that the wage figure is a much scarier, highly scrutinized number now. But that number doesn't just sit in a vacuum on the payroll register. It flows downstream into other critical areas. And this brings us to what I like to call the danger zone of the audit. The actuarial valuations. It is absolutely the danger zone because this directly triggers standard on Auditing 540. Which, for anyone who's sweated through a quality review, is the standard for auditing accounting estimates. Precisely. Unlike checking an invoice for a laptop, which is a verified historical fact, an actuarial valuation is a complex guess about the future. It's high risk by definition. The new wage definition flows directly downstream into gratuity and leave encashment liabilities. If the foundational wage base goes up, the projected liability explodes. So what's the required paper trail here? Because usually standard practice for some auditors is just to take the PDF report from the external actuary, file it in the folder, and pray the math is right. That is exactly what you cannot do under SA 540. The most critical document you need to create is the input data reconciliation. You have the HR master records on one side, and you have the raw data file sent to the external actuary on the other. You must document a hard reconciliation between them. But here is the specific check you have to document. Does the data sent to the actuary actually include the newly defined wage components? I see. Because if HR just sends the old basic plus DA figure to the actuary out of habit, the actuary, who is essentially just a math engine, will calculate a liability that is completely and materially understated. Garbage in, garbage out. You need to document that you verified those inputs before the actuary even touched them. And further, you need documentation lineage linking your review of the actuary's assumptions back to SA 540 requirements. You have to evaluate if the discount rates and salary escalation assumptions make sense given the new statutory burden. There's also a specific accounting trap here regarding the transition impact, isn't there? When that liability suddenly jumps up because the law changed, companies are going to want to hide that hit to their bottom line. Oh, they absolutely will try. It's a massive, unexpected cost. Management might want to treat it as an actuarial loss and bury it in other comprehensive income OCI so it doesn't crush their net profit for the year. But we can't let them do that. That's a misapplication of the framework. No, you can't. In AS-19 or AS-15, because this change is driven by a change in the law, which is a plan amendment, it is categorized as a past service cost. It must be expensed immediately to the profit and loss account. Ouch. Yeah. That completely kills the earnings per share for the quarter. It does. And that's exactly why the auditor needs to explicitly document that they challenged management's accounting treatment. You need a work paper that says, verified that the increase in liability due to statutory change was charged to P&L. If you find it sitting in OCI, that is a material misstatement. This is a really great example to summarize the core differences in documentation between high-risk areas like actuarial inputs versus routine control testing. Routine testing is usually just checking if the columns add up and the authorization signatures are there. But high-risk actuarial documentation is about checking if the logic itself is honest and evaluating management bias. Correct. You are rigorously auditing for estimation uncertainty and management bias, not just basic calculation errors. Let's shift gears from how much we are paying to who we are actually paying. The new codes have totally changed the guest list for these statutory benefits. It used to be that you had to work for a company for 5 continuous years to even sniff gratuity. That was the golden rule for decades. But under the new Social Security Code, fixed-term employees, your contract staff, are now entitled to gratuity on a pro rata basis after just 1 single year of service. 1 year. That's a massive liability shift for industries like construction, retail, or IT services that basically live on short-term contracts.
It changes their economics completely. So for your substantive testing steps here, you need to document a thorough review of the payroll master to specifically identify all fixed-term staff. Then you corroborate that by inspecting a sample of appointment letters. Finally, verify if anyone with more than 1 year of service has been properly accrued for gratuity. I can easily see a lot of legacy ERP systems missing this completely. They'll just have a hard-coded rule buried in the software that says, if service is less than 5 years, gratuity equals 0. Exactly. And the auditor needs to catch that hard-coded error. But it's not just the contract folks. The definition of who qualifies as an employee has expanded upwards into management too. Under the OSH code, the Occupational Safety and Health Code supervisors and managerial personnel earning up to 18,000 rupees per month are now officially covered as workers for certain benefits. The classic title inflation trick. Giving someone a fancy title like junior executive manager just so you don't have to pay them overtime, even though they earn a starting salary. The law is explicitly cracking down on that, so the audit implication is huge. You need to document a substantive review of the employee list, specifically looking for management personnel earning below that 18,000 threshold. Ensure you have documented proof that they haven't been improperly excluded from statutory benefits just because they have the word manager in their job title. So it sounds like the systems, the actual payroll software configurations, need a major overhaul by management to handle all this new logic. They do, and that immediately triggers auditor evaluation of controls over payroll system changes. This is the part that always feels a bit abstract to new auditors. We say test the control. But what does that actually look like in the file for these new wage definitions? It needs to be highly tangible. First, you look at design and implementation. Management had to change the payroll formulas to handle that 50% rule. You need to see the approval for that specific code change. I don't mean a verbal confirmation. I mean, you get a screenshot of the change request ticket in the IT system where the CFO or HR head formally signed off on the new configuration before it went live in production. Right, because if the IT guy just changed the multiplier on a Tuesday night because he read an article about the new codes, that's a massive control failure. A huge failure. But the most important control to test for operating effectiveness under the new codes is the reconciliation control between the HR master records and the payroll registers. Why is that specific reconciliation the top priority? How do we prioritize our control testing documentation based on inherent risk here? You prioritize based on the risk of omission versus calculation error. With all these new eligible categories like gig workers, fixed-term staff, and junior managers, the inherent risk isn't just that the payroll math is off by a few rupees because of a bad formula. The much higher inherent risk is that an entire class of eligible employees is left out of the payroll run completely because the HR system didn't flag them as eligible to the payroll system. That makes total sense. You can have a perfectly updated calculation engine, but if HR doesn't feed those new employee IDs into the engine, the liability output is 0. Exactly. So your work paper must document the operating effectiveness of that handoff. Verify and document that someone independent is routinely checking that the list of active people in HR matches the list of people actually getting paid and accounted for. Prioritize documenting that validation over checking if the professional tax deduction is correct to the last decimal. Now, we need to address the elephant in the room that we mentioned at the start, the audit fog. We said earlier that state rules are largely missing. So how do I actually audit compliance and gather evidence when the law itself is half finished? You have to build a very specific legal safety net in your documentation. You need to explicitly document management and the auditor's reliance on Section 6 of the General Clauses Act, 1897. That sounds incredibly dusty. Yeah. What does an act from 1897 actually do for us today? Think of it as the ultimate grandfather clause. It basically establishes the rationale that until the new state rules are finalized and say otherwise, you keep doing what the old rules dictated, provided it is not directly inconsistent with the new central code. It's your documented justification for why you accepted a certain calculation method in the absence of finalized state rules. You also document the use of the central draft rules as the best available basis for evidence gathering. And what about when the company just hands me a legal opinion?
Usually, a big, expensive law firm writes a 10-page memo saying management's interpretation of the wage definition is totally fine. Yeah. Do I just put a check mark and file that memo? Absolutely not. You have to critique it. When management relies on a legal opinion for these complex interpretations, you need to document your evaluation of that expert's competence, capabilities, and objectivity. Are they a reputable firm? Do they have a conflict of interest? But here's a specific documentation check that entry-level auditors almost always miss: the dissenting view check. What's the dissenting view check? You need to actively inquire and document if management considered any dissenting legal views or alternative interpretations before they settled on their final approach. Did they shop around to 3 different lawyers until they finally found one who agreed with their aggressive, cost-saving interpretation? That is fascinating. So I actually need a work paper where I document that. I ask the CFO, hey, did anyone disagree with this memo you handed me? Yes, it checks for confirmation bias. And if the situation is really messy, like if management's legal opinion heavily conflicts with public notifications or circulars from the Ministry of Labor, you need to document the specific decision process of whether to bring in the auditor's own legal expert. If there's significant uncertainty, you document why you felt your own expert was necessary to challenge management. We should also touch on management representations here, right? Mm-hmm. Because we need them to state their compliance status in writing. Yes, getting written representations is a mandatory audit documentation step. You need a signed letter from management explicitly stating that they have assessed the impact of the new labor codes, implemented necessary system changes, and to the best of their knowledge are in full compliance with all notified provisions. If they refuse to sign that specific clause, you have a major scope limitation. Okay, so we've done the testing, we evaluated the controls, we read the legal opinions, we found the gaps. Now we have to actually communicate this. Who do we tell and what do we write down? We report these significant qualitative aspects to those charged with governance TCWG. Usually that's the audit committee of the board. Right. And what goes into that communication document? It isn't just a list of math errors. You need to clearly document that you communicated the sheer complexity of the implementation. You report on any specific control gaps you found in the new payroll system configurations. And critically, you highlight those significant management judgments regarding the transition effect, like whether they properly expensed those past service costs for gratuity. The board needs to understand that their profit margin is down because of a statutory change, not necessarily because of bad operational performance. And finally, the ultimate weapon we have, the auditor's report itself. Under SA 250, consideration of laws and regulations, when do we actually pull the trigger and modify the audit opinion? Let's summarize the scenarios. If you find material noncompliance that leads to a material misstatement, for example, they flat out refuse to book the increased gratuity costs and their liabilities are understated by millions, that is a qualified or an adverse opinion, depending on pervasiveness. And what if they just stonewall you? Like they say, sorry, our legal opinion is strictly privileged. You can't see it. Just trust us. That is a classic scope limitation. You can't audit what you are artificially prevented from seeing. That leads directly to a qualified opinion or a disclaimer of opinion. What if they did everything perfectly right? They accounted for the transition, they updated the systems, but the financial impact is just so massive that the company's cost structure is fundamentally different now. In that scenario, everything is technically correct, so you don't qualify. But you add an emphasis of matter paragraph in EOM. You use the EOM to grab the reader of the financials by the shoulders and say, please look at note 42. The labor codes change their entire cost structure. It's fundamental to understanding the financial statements. Okay, we've covered a massive amount of ground today. But I want to deliver on our promise and boil this down for the newly trained entry-level auditor who is literally listening to this in an Uber on the way to their first client site. Let's translate all of this into a 5-step immediate action checklist. Let's do it. Step 1. Map the population. Before you do any math, verify the operating effectiveness of that HR to payroll reconciliation.
Reconcile the HR master to the payroll immediately to catch any excluded employees. Find the fixed term guys, find the gig workers, make sure they are actually on the payroll list. Step 2. Recalculate the wage. Do not trust the system summary. Pick a risk-based sample, grab a spreadsheet, and manually apply that 50% inclusion rule. Document exactly how your manual calculation matches the system. Step 3. Check the lineage. Trace the raw data sent to the actuary all the way back to the HR records. Did the new higher wage definition actually make it into the actuary's input file? Link this directly to your SA 540 documentation. Step 4. Read the opinion critically. Don't just file management's legal opinion. Compare it against the central draft rules. Document your evaluation of the expert and explicitly document that you asked about dissenting views. Step 5. Look for the gap in transition accounting. Check how the transition impact was recorded. Was that sudden gratuity increase expensed immediately as a past service cost? If management tried to bury it in OCI, you need to catch it and raise an issue. That is a fantastic, highly actionable list. And just to synthesize this and zoom out one last time, it seems like the documentation focus areas really split into 2 distinct buckets, depending on which specific code we're looking at. They absolutely do. If you look at the Social Security Code, your documentation focus is entirely centered on financial liability. Gratuity calculations, provident fund dues, gig worker Social Security contributions, and getting that core definition of wages right. Whereas the Industrial Relations Code is different. Right. The Industrial Relations Code focus is centered on process costs. A great example is the Worker Reskilling Fund. That requires crediting 15 days of wages for retrenched workers. It's a severance process cost triggered by an event, not a recurring monthly liability. So your documentation there is about checking the calculation and controls around that specific payout event when it happens. We're just about out of time. But you always have one final provocative thought or nightmare scenario to leave the listeners to mull over. What's the final thought for the labor codes? Well, here is a very specific, terrifying detail to explore on your own. The government notification stated that compliance is required immediately from a specific effective date. For our timeline, let's say that date is November 21st, 2025. Okay, November 21st. Notice that November 21st is right in the middle of the month. Payroll systems run on a full monthly cycle. Since there was no transition period provided, how exactly do you document the testing of the cutoff accuracy for a payroll processed right across that borderline? Oh, wow. So a single monthly paycheck has to accurately reflect 2 completely different legal regimes. Potentially, yes. Do you calculate 20 days on the old law and 10 days on the new law? The pro rata calculation and the system logic for that single transition month is going to be an absolute mess. And auditing the cutoff assertion for that specific period is going to require a lot of documentation and a lot of coffee. A mid-month regulatory switch with no transition grace period. Truly the worst kind of audit risk. Well, on that terrifying note, good luck to all the entry-level auditors out there starting their field work. Make sure your work papers are bulletproof, because the regulatory ground is definitely shifting beneath us. Thanks for joining us on this deep dive. Stay curious and remember to document absolutely everything. Hello and welcome. On November 21, 2025, India witnessed a historic reform that reshaped the future of work and compliance. The government enacted the new labor codes. These codes consolidate 29 existing labor laws into 4 unified pillars: wages, industrial relations, social security, and occupational safety, health, and working conditions. There is no transition period. Compliance is mandatory immediately. While some state rules are pending, existing rules remain in force if they align with the new codes.
Let us explore the vital changes. The definition of wages, the pay and benefits that an employee receives for work, has fundamentally shifted. While specific allowances, such as travel or housing, are excluded, there is a catch. If these exclusions exceed 50% of an employee's total pay, the excess is automatically added back to their core wages. This rule directly affects how gratuity, a retirement benefit, leave encashment, payment for unused leave, and provident fund, a savings scheme, contributions are calculated. The definition of employee now protects supervisory and managerial staff, and employer is also explicitly held accountable for contractors, individuals or businesses hired to perform work, but who are not direct employees. The codes set a national floor wage, require Social Security for gig and platform workers, and create a worker reskilling fund. Fixed-term employees now receive gratuity after 1 year, not 5. For financial reporting, businesses and auditors have new tasks under Standard on Auditing 250. The new wage rules and gratuity raise benefit obligations. Management must recalculate these liabilities immediately. According to the ICAI, any increase in gratuity, a lump sum paid to employees at retirement or resignation, or leave obligations, the company's liability for employees' accrued unused leave, due to these codes must be treated as a past service cost, an expense arising from changes to employee benefit plans for service in prior periods, either under IND AS 19, Indian Accounting Standard 19, Employee Benefits, or AS 15, Accounting Standard 15, Employee Benefits. This cost must be recognized immediately as an expense in the Statement of Profit and Loss, the financial report that shows the company's performance. If you are preparing interim financial results for December 2025, this increased liability must be recorded now. For financial periods ending before November 21, 2025, the enactment is a non-adjusting event. However, it requires detailed disclosure of the estimated financial effect. Additionally, because income tax deductions for these provisions are allowed only when actual payments are made, this creates timing differences between taxable and accounting profits. You must recognize deferred tax assets, future tax benefits due to timing differences, accordingly. Auditors must rigorously evaluate management's compliance. You must review updated human resources policies and verify payroll system configurations, the software that manages employee pay. Test whether actuarial assumptions, which are predictions used to estimate costs, use accurate data based on the revised wage definition, any changes to what is considered part of employee pay. Be alert to risks, such as intentional salary restructuring, deliberate changes to how employees are paid. If management has transparently accounted for and disclosed these impacts, an emphasis of matter paragraph, a section highlighting important issues, may be included in your report. However, material misstatements or significant errors or incomplete assessments will necessitate a qualified or adverse opinion, a formal statement that the financial information is incorrect or incomplete. These labor codes transform compliance and financial reporting. Assess changes now to ensure a smooth transition. Thank you for your dedication.